Yes, we are live on YouTube. Atul bhai, please start. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત આજના ચોથા ત્રિવેણી ફેડરેશન પ્રવચન કે જેમાં ગુજરાત, મુંબઈ અને કર્ણાટક સામેલ છે અને પ્રવચનનો વિષય છે બલિદાનનો નિયમ. તેના વક્તા સંધ્યા રાનીજી, લલિતા નટરાજન અને રુદ્રાક્ષી દેવ તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. કેશોરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરાવશે. કેશોરબેન. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light. Oh, hidden light in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, Embracing all in oneness. All in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. As one with thee. No, he is also one with every other. No, he is No, also he is one also one with every other. Every other. Shanti, Shanti, Shanti. Oh, શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજના પ્રવચનની કાર્યવાહી આગળ કરવા માટે આમંત્રિત કરું છું. શ્રી તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू अतुल भाई और आप सभी का स्वागत है इस TS त्रिवेणी ट्यूसडे मीट के चौथे संस्करण में, जो कि फेडरेशन की मीट है और कर्नाटका, गुजरात, मुंबई ये तीनों आयोजन कर रहे हैं और राजस्थान फेडरेशन की एक वक्ता आज बोलने भी वाली है. तो वाकई में मिलावड़ा बढ़ता जा रहा है. आज का विषय आपको मालूम ही है, द लॉ ऑफ सेक्रीफाइस, जिसपे इंग्लिश में संध्या जी कहेंगी, ललिता जी उसे कन्नड़ में कहेंगी और हिंदी में रुद्राक्षी. संध्या जी 18-18 मिनट के 2 पार्ट में कहेंगी और दोनों जो लैंग्वेज के वक्ता हैं वो 9-9 मिनट में अपनी बात का 2 पार्ट में समापन करेंगे. बीच में मैं अगर समय ज्यादा होगा तो सिर्फ बोल दूंगा कि 2 मिनट्स मोर या 3 मिनट्स मोर. थैंक यू सो मच. और शुरुआत करते हुए मैं परिचय देना चाहूंगा संध्या जी का. तो संध्या जी तो बहुमुखी प्रतिभा है ही, लेकिन आप 24 घंटे में कभी भी बात करो तो ये सदा मुस्कुराती और एक अच्छे से मूड में ही रहती है. कभी भी आप इन्हें ये नहीं पाएंगे कि जिंदगी के उतार चढ़ाव ने इन्हें हिलाया है. इन्होंने थियोसॉफी ज्वाइन की 1991 में. वे सिटी लॉज बेंगलुरु कर्नाटका की मेंबर है. उन्होंने MA किया है कन्नड़ा में और ML किया है लिवर लॉ. हुडको में वो AGM की तरह भी कार्यरत है. और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इंग्लिश से कन्नड़ में करीब 15 से 20 किताबों का अनुवाद किया है. तो ये बहुत अद्भुत. हाँ, असिस्ट किया, अनुवाद नहीं है जी. हाँ जी, अनुवाद करने में असिस्ट किया है. मैं तो ट्रांसलेटिंग समझा तो हो गया. उन्होंने असिस्ट किया है. असिस्ट करना और बड़ी बात है, क्योंकि सारे ड्राफ्ट खुद को ही लिखना पड़ते हैं, राइटर को नहीं. तो वो और ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि मैंने भी किया है ये कार्य. बहुत सारी स्टडी क्लासेस में इन्होंने कंडक्ट किया है, भोपाली में, नोडिया, केरला, ओडिशा और बहुत सारी जगहों पर कर्नाटका में. सबसे जो अद्भुत बात लगी कि राधा जी को उन्होंने 3 बार असिस्ट किया है या उनके साथ उन्होंने सेवा की है एज एन इंक्वायरी ऑफिसर, जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन होते थे अडियार में उस दौरान. तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा होगा और वे भाग्यशाली हैं. और हम सभी की तरह उनका एकमात्र उद्देश्य है कि थियोसॉफी को ज्यादा से ज्यादा फैला. आइए संध्या जी, आपका स्वागत है. थैंक यू मुंशी जी, आपके वजह से मुझे सबसे मुलाकात हुआ. आफ्टर मोर देन 2 years 3 years केशव जी से को देखने के लिए मिला, अदर देन दिस यूट्यूब. बहुत अच्छा लगा. कर्नाटका, गुजरात और मुंबई थियोसॉफिकल सोसाइटी त्रिवेणी लॉज के लिए मैं बहुत आभारी हूँ. थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. लॉन्ग बैक आज का विषय है द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस. लॉन्ग बैक आई had read one sentence wherein Annie Besant had mentioned theosophy माने we believe 3 laws, that is law of karma, law of incarnation and law of evolution.
So wherein Annie Besant had mentioned law of sacrifice को कितना value मिलना चाहिए उतना नहीं मिला बोल के. So I was just thinking उस दिन से जहाँ जहाँ sacrifice के बारे में लिखा है, I thought let me compile everything, let me do something. मौका नहीं मिला था. अभी TS त्रिवेणी लाज के वजह से मुझे मौका मिला है. I'm really very glad. So first in the beginning, let's try to understand what sacrifice means. Sacrifice means renounce. जो है, we have to just renounce. Give up, relinquish, offering, forego, dedicate, yield, offer. All these things, etc., etc. All these things are the dictionary meanings. I was just thinking since 15-20 days, sacrifice means what? What is that I think about sacrifice? So let me define both. I was just thinking. For me, sacrifice means sacrificing the selfishness. Sacrificing selfishness is known as sacrifice. That is the meaning for me. Then from where the word sacrifice has come, where is that root? Then sacrifice, it's an English word and it has come from Latin. In the beginning, in Latin also, the language has modified several times. So in the beginning, they used to call as facere, F-A-C-E-R-A, then saxer, S-A-C-E-R. Then later, in the same Latin word, sacrifice has come. That is sacrifico, S-A-C-R-I-F-I-C-O. Means I make or offer a sacrifice. I sacrifice to suffer loss. I sacrifice to suffer the loss, whatever I have lost. Then selling something at less cost, less than its value. Then offering of anything to the god. An act of slaughtering an animal or a person or surrendering to the possession as an offering to God. Few years before in Karnataka also, I have read in several newspapers, they used to sacrifice the kids to gain something. So not only animal, including their own kids, they used to sacrifice to God. The root of sacrifice is this joy in pouring forth to bring many into union with itself, and at the end is to be the peace which passeth all expression. So in the beginning, sacrifice is pain, but at the end, it gives lots of peace and satisfaction. So life is preserved by sacrifice. Life itself, entire life itself is preserved by sacrifice. And in sacrifice, all evolution is rooted. Just when I started the conversation, I just told law of evolution is there. So where is the root of evolution means evolution itself is rooted in sacrifice. Every religion that springs from the ancient wisdom has sacrifice as a central teaching. All the thing, Kendra Bindu we say in Kannada. Central teaching, the core teaching, what it means is, it is the sacrifice. From all, every religion has got the same thing. All ancient religions or ancient wisdom has sacrifice as a central teaching. And some of the profoundest truths of occultism are rooted in the law of sacrifice. Some of the profoundest truths of occultism, so many truths we have known from, if we study occultism, no, gradually. But that root is very deep rooted. That is rooted in the law of sacrifice. The first thing to grasp is that creation itself is sacrifice. Who has sacrificed? Ishvara has sacrificed. Ishvara confines himself, limits himself in matter in order that a universe may be made manifest. Because of his sacrifice only, whatever the universe has been created, in the universe in which we are living is the sacrifice of Ishvara. Then how to implement the sacrifice in our life? There are so many things. So if we really, then who can sacrifice? The person who has only can sacrifice, not all. The person who asks, I want, that person definitely cannot sacrifice. Only the person who has it, who possesses it, only can sacrifice. And who can sacrifice?
Again, the person who is in Pravrutti Marga definitely can't sacrifice. Only the person who is in Nivrutti Marga can sacrifice. That too, especially the person who is in the occult path only can sacrifice. So here, for the beginners, what they call as disciples, they say. So the disciple art is an altar, okay, wherein people perform puja. Love to his Lord, the flame burning upon it. All his acts, physical, astral, mental, because we are all working in our personality, no, all this physical, astral, and mental are sacrifices offered on the altar, and once offered, he has with them no further concern. It's given as an offering to the God, and there it ends. Our duty is over. Nothing, no expectation in return. To sacrifice present enjoyment for the service of others is not self-denial, but self-expression to the spirit who is man, doing every act as a sacrifice, not for what it will bring the doer, but for what it will bring to others. So what the other person gets is more important than what one gains for oneself. The true life of sacrifice is that which utterly forgets itself, in which renunciation becomes so common that there is no effort. Without putting any effort, Aram se easily he does everything as in the form of sacrifice. And then later, sacrifice becomes more than paying of a debt. In case if we have borrowed anything or taken any money from anybody, means that is considered as debt. That means to say we have to repay that debt. But here, sacrifice is not a paying of a debt. It becomes a joyful giving to everything that man has to give. It's joyful giving. That happiness is there. Sacrifice is longing to pour forth something which is possessed. Means what one has got within himself and which precious to the possessor. Only the precious things only we can sacrifice. Now all these politicians are ruling, but before only kings used to rule. So during that time, whatever the precious things one used to have, they used to go and offer to the king. That was the tradition, especially in India, that used to be there. Then when I was just thinking, there are only two things in sacrifice. That is sacrificing the selfishness. What is that selfishness? What I want. That is known as preya. What other, it will benefit to the entire world. That is known as shreyas. Shreyas and preyas. In Kathopanishad, very nicely it has been written. The good is shreya and the pleasant, which gives us to the individual more satisfaction. Individual feels very happy. That is known as preyas. There are two different things. They motivate a person to pursue two different goals. The one who embraces the good meets with the auspiciousness, but the one who chooses the pleasant is lost. This is what Kathopanishad says in 1.2.1. Preya demands freedom of the senses. Preya demands freedom of the senses, whereas Shreya demands freedom from the senses. Everything, whatever we possess, is for our sense, to gratify our senses only. No, that is nothing but sensual gratification. So Preya is what we like, what I want, what pleases me, what offers immediate gratification to my own senses, feeling and self-will, without providing us with a lasting benefit in the long term, sensual enjoyment and temporary ego and satisfaction. Preya is identified with ignorance. The person who is ignorant of this evolution only chooses that Preya. Means only I want, me is everything. That is what Preya says, or we get satisfaction in prayers. That is nothing but our lower personality will be satisfied. But whereas in Shreya means Shreyas to the entire world. In Shreyas, everybody will come in the front and the self will be at the end. Shreya means choosing the best consequences, whether it feels good or not, often forgiving a temporary pleasure, that we will foregoing the temporary pleasure for the sake of lasting benefit. That is commitment to do that
which is beneficial and good in the long run. It is not temporary thing, it will be good in the long run. Shreya leads us inward to the core of our being, which is true happiness and peace. With ignorance, we will see outside, but with self-knowledge, we will see inside. Shreya is identified with knowledge, that is wisdom also we can say. We slowly and gradually rises above all thoughts, save the thought of unity and feels oneself a part of this great suffering world. I and the suffering person are not two different things. It is one and only one. There is no sense of separation. There is no sense of asking. It's only giving. I used to assist that I was, as introduced, no? I was assisting one lady, senior Theosophical Society member. Her name is Rukmini Krishnamurti. Always she used to tell, Saturday, Sunday, I used to go and work along with her. Sandhya, in this life, in case if you want to learn something, how one should lead a life means one should lead a life with lots of virtues in one's life. In this life, one has to learn virtues. We have to implement those virtues in our life. That is what she has taught me, I can say. And there was no gossip whenever I used to go to her. Only society work, that's all. So she had taught me one has to learn to lead a virtuous life. There are so many virtues, n number of virtues are there for us to learn. Few virtues actually even at present we are implementing, but not all. Namely, few things, that is courage, patience, truthfulness, justice, acceptance, cleanliness, compassion, confidence, contentment, cooperation, determination, endurance, enthusiasm, faith, forgiveness, fortitude, gratitude, honesty, independence, initiative, mercy, sacrifice, simplicity, sincerity, tolerance, service, and finally, love. Like this, there are so many virtues are there which we have to implement, try to implement in this life. Then again, other than all these virtues, one has to learn. That is the basic thing. That is what it has been mentioned in At the Feet of the Master. What it says is discrimination. Discrimination is to be practiced in one's life, not at the beginning of the path, but at every step of it, every day until the end, between the real and unreal, the right and the wrong, the important and the unimportant, the useful and the useless, the true and the false, the selfish and unselfish. In our Hindu ritual, if we really see, sacrifice means yagna, yaga, also it's there. In Hindu tradition, every day one human being has to sacrifice 5 different things. It is well known as 5 sacrifices. The word visible, that is we sacrifice to the Deva. That is the thing which we perform puja early in the morning. Sacrifice to rishis. How do we sacrifice to rishis means the sacrifice to the wise, the sacrifice to the teachers by study. Study for what? Study whatever we learn. In order to teach, one is supposed to study. This is the main thing. Thus, we keep up the succession of that knowledge. Whatever we have received, our duty is to give back to them, hanging it down from generation to generation. Now we have got books, etc., etc. But before and all, nothing. Only through Shrotru, from one disciple to the another disciple, it used to come. From generation to generation, it has come. So we have to give whatever that we have studied, we have to give it to the others. Then debt to elders, the sacrifice to the past, that is Pitri, sacrifice to the ancestors. The recognizing in that as we received from the past, we must pay our debt by giving to the future. So we have to continue the generation. Then debt to humanity. Whatever we eat, at least we have to feed one needy person. At least one person should eat. Then sacrifice to animals. Still they have to evolve. So for at least minimum 2 to 3 animals every day, we have to feed. All these sacrifice comes under the sacrifice on day-to-day basis. Namaste. Then I'll continue in that second session.
Thank you so much for your first session and completing it on the exact time. Now I will request our other Kannada speaker, ललिता नटराजन जी का एक हल्का सा परिचय देना चाहूंगा कि उन्होंने बीएससी किया है और उसके बाद सोशल वर्कर हैं। मुंबई उन्होंने मेंबर बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1980 में। वो मेंबर ऑफ थियोसॉफी ऑर्डर ऑफ सर्विस यानी टीओएस की 1980 में वो मेंबर बनी और ऑनररी सर्विसेज वो होम्योपैथिक हीलिंग सेंटर में देती हैं अपनी ओर से। वो भी 1981 से बहुत बढ़िया काम करती हैं। लेक्चर्स देती हैं स्पिरिचुअल सब्जेक्ट पर, वो भी 1981-82 से उन्होंने देना शुरू कर दिया। और वे फैमिली काउंसलर की तरह प्रसन्ना काउंसलिंग सेंटर में संलग्न थी 1985 से 1988 तक, फ्रॉम 1985 टू 1988। वेलफेयर एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली फॉर हैंडीकैप्ड और नीडी पर्सन्स। बहुत अच्छी बात है, मतलब टीओएस एक्टिविटी तो उनकी वैसे भी पर्सनली भी चालू है और उन्होंने उस तरह से बहुत कैलाश मानसरोवर की शायद यात्रा भी उन्होंने एक बार की है और वे हमें इस पे बाद में स्पीच के बाद भी एनलाइटमेंट दे सकती हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। आप कन्नड़ में 30 मिनट में अपना विषय रख सकती हैं। धन्यवाद। Thank you to all for giving me the opportunity to speak on this त्रिवेणी संगम, 3 लॉर्जेस का, 3 फेडरेशंस का कार्यक्रम में आपका बहुत धन्यवाद है। मैं अब क्या वो सैक्रिफाइस नियम का है उसका कन्नड़ का ऐसा मैं लूंगी। ತ್ಯಾಗದ ನಿಯಮ. ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತ್ಯಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಪಣೆ, ಕೊಡುವುದು, ದಾನ, ಹೋಮ ಮಾಡುವುದು, ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಪದ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸಾಸರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಆ ಪದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು, ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಯನ್ನ ಕೊಡುವುದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಇದರ ಮೂಲ ಆಶಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬರೀ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರೋದು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇಡೀ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗದಿಂದನೇ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನುವ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ವಿಕಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸನಾತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉದಯವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಬೋಧೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೋಧೆಯನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಉದಯವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಭಿಜ್ಞವಾದಂತಹ ಸತ್ಯ ತ್ಯಾಗದ ನಿಯಮದ ಮೂಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ತ್ಯಾಗದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಶ್ವರ ತಾನೇ ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟುದರಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಈ ತ್ಯಾಗವೇ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತ್ಯಾಗವೇ ಕಾರಣ. ಅವನು ತಾನು ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಇಚ್ಛಿಸಿದವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡೆಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ, ತಾನೇ ಯಜ್ಞವಾದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಈಶ್ವರನ ಮಹಾತ್ಯಾಗದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗದ ನಿಯಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಶ್ವರನ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು. ತ್ಯಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವನ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸರಣೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವನ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಈಶ್ವರನ ಲೀಲಾ ವಿನೋದದ ಬಗ್ಗೆ ಅರವಿಂದರು, ಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is the aesthetic dance of Shiva, which multiplies the body of the god numberlessly to the view. Its sole absolute object is the joy of dancing ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈಶ್ವರನ ಮೋಹಕವಾದ ಆನಂದಭರಿತ ಸಂಭ್ರಮದ ದೃಶ್ಯ. ಈ ನೃತ್ಯದಿಂದಲೇ ಈಶ್ವರ ತಾನು ಅಸಂಖ್ಯ ಕೋಟಿಯಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಏಕೈಕ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಈ ನೃತ್ಯದಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಸಾಟರಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೀನಿಂಗ್ is a thing of joy. The Logos pours himself out to make a world, and seeing the travailing of his soul is satisfied ante. ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನುವ ಪದದ ಮೂಲ ಅರ್ಥವೇ ಆನಂದ. ಈಶ್ವರ ತನ್ನನ್ನ ಅನೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿಡಿಗಳನ್ನ ಹೊರಸೂಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕಿಡಿಗಳೇ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಂಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪಡುವುದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಸಿಗುವುದು ಆನಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಾವು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಧಕನ ಹೃದಯ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಲಿಪೀಠದಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಇದು ಬಲಿಪೀಠದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಅವನ ಪ್ರೇಮವೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಥೂಲ ಲೋಕ, ಕಾಮಲೋಕ ಮತ್ತು ಮನೋಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಬಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತನಗೇನ್ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕರಣೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ, ಅವರ ಖುಷಿಗಾಗಿ, ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅದು ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಕೂಡ, ಈ ಎಲ್ಲ ದಾನವನ್ನ, ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಅಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಪಣೆ ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಾಲ ತೀರ್ಸುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆನಂದದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ತ್ಯಾಗದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಆನಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಿಡೋರಕ್ಕೆ ನಾವು ತವಕ ಪಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2 ಪದಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇಯಸ್ ಅಂತ. ಈ 2 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ. ಶ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯ 2 ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದದ್ದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದೇ ತರ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಶ್ರೇಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಯ 2 ಒಂದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೆರಡು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶ್ರೇಯ ಒಂದು ಗುರಿ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಪ್ರೇಯ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರಿ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಶ್ರೇಯವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೋ ಅವನು ಶುಭಕರವಾದದ್ದನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಪ್ರೇಯದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗ್ತಾನೋ ಅವನು ನಾಶವಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಇದು
ಪ್ರೇಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಅವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತಾವು ಸುಖ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅಹಮ್ಮನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೋ, ಅಹಂಗೆ ಯಾವುದು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ, ಅಂತ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಅಜ್ಞಾನ, ಬರಿಯ ದೇಹಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಕಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ. ನಶ್ವರ ಸುಖ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ, ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ವೇ ಜನಾಹ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಇರೋದು, ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ ನಾವು, ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೇರಿ ಐಕ್ಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ನಾನು ಅಂತ ಅರಿತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಈ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿನೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು, ಸಹನೆ, ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಶುಚಿತ್ವ, ಕರುಣೆ, ತೃಪ್ತಿ, ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ, ಸಮರಸತೆ, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಿಕೆ, ತ್ಯಾಗ, ಸರಳತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಮತ್ತು ಸಹನೆ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ. ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಪಯಣದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಕೊನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಿರ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಯಾವುದು, ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅಂತ, ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು, ಅಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು, ಅನುಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಯಾವುದು, ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬರಿಯ ನಮ್ಮ ಈ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪುವ ಹಂತ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 5 ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವು ಎಲ್ಲರ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತೀರಿಸುವಂತಹ ಋಣಗಳು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಋಣ ಸಂದಾಯದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದು. ಋಣ ಸಂದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವಋಣ. ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಋಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇವಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನ ಋಷಿ ಋಣ. ಋಷಿ ಋಣ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಅವರು ಜ್ಞಾನ ದೇವತೆಗಳು, ಅವರಿಂದನೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯೋದು. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇತರರಿಂದ, ಋಷಿಗಳಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ಹಂಚುವುದರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಸ್ಥಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚೋದ್ರಿಂದ ಈ ಋಣವನ್ನ, ಋಷಿ ಋಣವನ್ನ ನಾವು ತೀರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಪಿತೃ ಋಣ. ಪಿತೃಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ please sum up in 1 minute. Okay. Time is up. Thank you. ಓಕೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಹಾಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಋಷಿ ಋಣ ತೀರುತ್ತೆ. ಸಮಾಜದ ಋಣ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ.
ಭೂತಋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕು, ದಿನವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ ಜಿ. सर अनम्यूट करिए आप. थैंक यू सो मच ललिता जी. और लैंग्वेज स्पीकर्स को 9 मिनट्स का टाइम है, तो रुद्राक्षी आप भी ध्यान रखिएगा. और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रुद्राक्षी जी को. रुद्राक्षी क्लास की 12वीं कक्षा की छात्रा हैं और उन्होंने आर्ट में अपना कार्य चुना है. वो आर्ट की पढ़ाई करती है. बेसेंट लॉज जोधपुर राजस्थान से संबंधित है और उनकी हॉबी बहुत अनोखी है. मतलब काफी तो बहुत सिंपल है, ट्रेवलिंग, रीडिंग, एडवेंचर, डांसिंग, स्पोर्ट्स, लेकिन अति उत्तम है स्पिरिचुअलिटी. तो वो इस छोटी सी उम्र में भी स्पिरिचुअलिटी को एक हॉबी की तरह फॉलो कर रही हैं. बहुत सारी भाषाएं सीखना चाहती हैं. वर्तमान में वो कोरियन लैंग्वेज सीख रही हैं. एनी बेसेंट जी के प्रेरणादायक जीवन चरित्र से उन्होंने जो किताब पढ़ी उनके संदर्भ में उनके ज्ञान बटोरा, उससे वो प्रभावित हुई आने के लिए थियोसॉफी में. और 4 साल से ही वे मात्र थियोसॉफी में हैं, लेकिन कहती हैं कि वो इंस्पायर्ड हैं, उन्हें प्रेरणा मिली है. मैन एंड हिज बॉडीज बाय डॉक्टर एनी बेसेंट, माय प्रॉमिस बाय सी गिरिराज दास, एंड हाउ टीएस केम इन माय लाइफ बाय C.W. लेडबिटर सर. तो बहुत ही बढ़िया है कि 4 साल में उन्होंने अनेक किताब पढ़ी होंगी, लेकिन प्रभावित इन 4 सभी ऐसी अध्ययनरत और कर्मठ. अभी अभी उनकी एग्जाम खत्म हुई है, इसलिए बीच में 3-4 महीनों से नहीं जुड़ पाई. आइए और हिंदी में अपना विषय कहिए. समय सीमा का 9 मिनट का ध्यान रखिएगा. धन्यवाद. नमस्कार सभी को. आज हम जो है बलिदान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम बलिदान का अर्थ जान लेते हैं. बलिदान का अर्थ है त्याग देना, त्याग, एक समर्पण, या प्रस्ताव. विशेष रूप से एक आदर्श विश्वास या अंत के लिए कुछ त्याग. अपने मूल्य से कम पर कुछ बेचना, भगवान को भेंट करना, किसी और चीज के लिए किसी चीज को नष्ट करना या समर्पण करना. बलिदान की जड़ कई लोगों को खुद के साथ एकता में लाने के लिए आगे बढ़ना है, जिसका अंत शांति होना है, जो सभी अभिव्यक्ति को पार कर जाती है. बलिदान से जीवन की रक्षा होती है और बलिदान में ही सभी का विकास निहित है. प्राचीन ज्ञान से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक धर्म में केंद्रीय शिक्षा के रूप में बलिदान होता है और गूढ़वाद के कुछ गहन सत्य बलिदान के नियम होते हैं. समझने वाली पहली बात यह है कि सृष्टि बलिदान है. ईश्वर ने स्वयं को सीमित कर दिया है ताकि ब्रह्मांड को प्रकट किया जा सके. जो व्यक्ति यज्ञ के नियम के अनुसार जीता है, वह आत्मा की एकता का अनुभव करता है और वास करने वाले जीवन में नहीं, बल्कि धारण करने वाले पात्र में केवल एक अंतर को पहचानता है. इसलिए वह दूसरों के साथ और दूसरों के लिए जो कुछ इकट्ठा करता है, उसे साझा करने के लिए वह केवल अपने अलग बर्तन में ज्ञान इकट्ठा करता है, और दूसरों के लिए जो कुछ इकट्ठा करता है वह पूरी तरह से अलग जीवन की भावना को खो देता है और दुनिया के जीवन का हिस्सा बन जाता है. अब हमने जब बलिदान शब्द का अर्थ समझा, अब हम अपने जीवन में बलिदान को कैसे लागू कर सकते हैं, आपको मैं उससे कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ. पहला पॉइंट है उसका, यानी कि शिष्य का हृदय एक पेटी है. अपने प्रभु के प्रति प्रेम, उस पर जलती हुई लौ, उसके सभी कार्य शारीरिक सुख और मानसिक वेदी पर चढ़ाए गए बलिदान है, और एक बार चढ़ाए जाने के बाद उन्हें उनसे कोई और सरोकार नहीं है. दूसरा पॉइंट है दूसरों की सेवा करना. दूसरों की सेवा के लिए वर्तमान भोग का त्याग करना आत्म इनकार नहीं है, बल्कि आत्मा अभिव्यक्ति है. आत्मा के लिए जो मनुष्य है, हर कर्म को यज्ञ के रूप में करना, इसलिए नहीं कि वह कर्ता को कुछ प्राप्त होगा, बल्कि बलिदान ही है जिससे सबका कल्याण होगा.
बलिदान जो व्यक्ति करता है उसका वो खुद के जीवन को पूरी तरह भूल जाता है। उसकी आदत बन जाती है दूसरों की सेवा करना, दूसरों को कुछ देना। हमेशा उसमें देने की भावना निहित रहती है, वो कभी देने की आदत उसमें नहीं रहती है। बलिदान एक कर्ज के भुगतान से अधिक हो जाता है। मनुष्य को जो कुछ देना है उसे देना एक आनंदमय दान बन जाता है। बलिदान किसी ऐसी चीज को उड़ेलने की लालसा है जो पास है और जो मालिक के लिए कीमती है। बलिदान का नियम दैवीय प्रकृति पर आधारित है कि सर्वोच्च बलिदान जिसके द्वारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था यह देने का कार्य था। प्रकृति द्वारा जो आनंद है विवशता के बंधनों को तोड़ता है और इसलिए वह एक पूर्ण निस्वार्थता सीखता है कि जो वह चाहता है वो सभी के लिए अच्छा हो। जो वह चाहता है वो सभी के लिए अच्छा हो। अच्छा, श्रेया और सुखद क्रिया दो अलग अलग लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो अच्छे को गले लगाता है वह शुभता से मिलता है, लेकिन जो सुखद को चुनता है वह उसमें खो जाता है। तथा उपनिषद इंद्रियों की स्वतंत्रता की मांग करती है, जबकि श्रेया इंद्रियों से मुक्ति की मांग करती है। प्रिया वह है जो हमें पसंद है, जो हमें प्रसन्न करती है, जो हमारी इंद्रियों, भावनाओं और आत्म इच्छा को तत्काल संतुष्टि प्रदान करती है। हमें दीर्घकालिक कामुक आनंद, अस्थायी अहंकार और संतुष्टि में स्थायी लाभ प्रदान किए बिना प्रिय की पहचान अज्ञान से होती है। लेकिन श्रेय का अर्थ है सर्वोत्तम परिणामों को चुनना, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। सर्वोत्तम परिणाम को चुनना अक्सर अस्थायी लाभ के लिए अस्थायी सुख को छोड़ना, वह करने की प्रतिबद्धता जो दीर्घकाल में लाभकारी और अच्छा हो। श्रेय हमें हमारे अस्तित्व के मूल में ले जाती है, जो सच्चा सुख और शांति है। श्रेय की पहचान ज्ञान से होती है, वह धीरे धीरे सभी विचारों से ऊपर उठता है। एकता के विचार को छोड़कर और खुद को इस महान पीड़ित दुनिया का एक हिस्सा महसूस करता है। व्यक्ति को एक सद्गुण संपन्न जीवन जीना सीखना होगा। सहयोग, दृढ़ संकल्प, धीरज, उत्साह, विश्वास, क्षमा, दृढ़ता, कृतज्ञता, सहिष्णुता, सेवा, प्रेम का अभ्यास करना है। न कि केवल शुरुआत के पद, लेकिन उसके हर कदम पर, हर दिन अंत तक वास्तविक, असत्य, सही और गलत, महत्वपूर्ण और महत्वहीन, उपयोगी और बेकार, सच्चा और झूठा, स्वार्थी और निस्वार्थ। एनी बेसेंट द्वारा उच्च जीवन के नियमों में उल्लेख किया गया है कि बलिदान का कानून उसे ऊपर की ओर उठाता है और उसे दिव्य योग के साथ एकता तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उस पर बलिदान छपा हुआ है। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वह स्वयं बलिदान के कार्य में उत्पन्न होता है, लोगों की सीमा में, ताकि दुनिया सामने आ सके। सभी धर्मों में इस बिंदु पर केवल एक ही शिक्षा है, वह अभिव्यक्ति ईश्वरीय बलिदान के कार्य से शुरू हुई। आपसी आदान प्रदान के आधार पर पारस्परिक निर्भरता के तथ्य की मान्यता से सभी जीवित चीजें मौजूद है। ऋण जो किसी उपयुक्त वस्तु के बलिदान द्वारा चुकाया जाना चाहिए, अन्य जीवन के रख रखाव के लिए सभी जीवन एक सोने की जंजीर से बंधे हैं और वह सोने की जंजीर बलिदान का नियम है, न कि लोभी का नियम। हिंदू कर्मकांड सुप्रसिद्ध 5 यज्ञ। पहला, अदृश्य संसार देव जगत के साथ। दूसरा, ऋषियों का यज्ञ, ज्ञानियों का यज्ञ, आचार्यों का यज्ञ। अध्ययन से हम कम से सीखते हैं सीखने के लिए, और इस प्रकार हम ज्ञान के उत्तराधिकारी को बनाए रखते हैं, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपते हैं। बड़ों का कर्ज, अतीत को बलिदान, पूर्वजों का बलिदान, पितरों को इसमें पहचानना कि जैसे हमें अतीत से प्राप्त हुआ है, हमें भविष्य को लेकर अपना कर्ज चुकाना होगा। चौथा, मानवता को कर्ज देना होगा। हमें सिखाया जाता है कि हमें हर कम से कम एक आदमी को खाना खिलाना चाहिए। और 5वां है पशु यज्ञ, यानी कि जानवरों को सेवा करना, पशुओं को भोजन उपलब्ध कराना। धन्यवाद।
समय सीमा पर समाप्त किया रुद्राक्षी. थैंक यू सो मच. संध्या जी, प्लीज कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट. आप आमंत्रित. Please unmute yourself. Thank you. Welcome for the second session. In the beginning, I had mentioned Annie Besant का एक sentence मैंने पढ़ी थी. Then on sacrifice, Annie Besant has written 2 articles in 2 books. That is Law of Higher Life and Ancient Wisdom. दोनों किताबों में एक chapters she has mentioned about sacrifice. And in that she writes, law of sacrifice lifts human being upwards and enables him to reach union with the divine. This means to say that is nothing but yoga, union with the divine, not union with human being or with human being. It is not downward, it is upward. That is the ultimate goal of a human being. Then again she writes, sacrifice is printed on the universe. जो साड़ी पहनता है ना, इसमें printed साड़ी बोलता है. That is printed, that is inbuilt. Sacrifice is printed on the universe. It cannot be erased. In which we live, all lives are bound together by a golden chain, and that golden chain is the law of sacrifice and not the law of grasping. That is just sacrificing, give, not take. So we have to learn that the world is bound by action. Saved by such action is as sacrifice. We all know that the core teaching has been given even in Bhagavad Gita. In that second chapter, 47th shloka, it has been mentioned, Karmanye vadikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala hetur bur mato sangosti swakarmini. That means to say you have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your action. Never consider yourself to be a cause of the result of your activities, nor be attached to inaction. O son of Kunti, perform thou action. All actions are to be seen in the light of sacrifice. By the renunciation of the fruit of action, when we sacrifice the fruit of action, we are beginning then to loosen the bonds of action which binds us to the world. We are having only one duty, that is to do work. That's all. Everything. In case if you have love within yourself, then express it. It should not be confined to the thought. If it is really true, then you have to express in action. The thought must result in action. That is what it says. Then we are having the duty. We have to act. We should not be inactive also. That is also wrong. But we have to renounce the fruit of action, because we know that whatever the action that we have done, that is out of love, out of sacrifice. That means to say that is good only. That is, it binds us together. That is the union. There is no sense of separateness. So we know that if we have saw the mango seed, means the result will be mango only. It cannot be neem. That confidence one should have. So again, then she writes, now the lesson to be learned in the evolving of man is nivrutti. Pravrutti is taking. I want. In nivrutti, only giving. Nothing is there. The self is not there. During that time, the jiva will take U-turn. When the form is developing, it is accumulation. When the spirit is developing, that is giving. That U-turn, this is very, very crucial time. So in that nivrutti marga, the jiva takes the U-turn. This is the critical point comes now in the history of the evolving jiva. He is trying to sacrifice the fruit of action. Trying to sacrifice. It is not that he has already learned. Trying to be dead to attachments. All our problem is due to attachment only. Vairagya seizes him. Dispassion overcomes him. He finds himself hanging, as it were, in the void. That is Shunya Bhava. All motive for action has disappeared.
There is no interest only. He has lost the stimulus of pravrutti marga. I want has gone. He has not yet found the stimulus of the nivrutti marga because he has not yet seen. Disgust of all objects is upon him. He seems to have veered the law of duty. He has not yet seen the art of law of sacrifice. That is the altar, love of God. At this moment of pause, there is no pravrutti, there is no nivrutti. At this moment of pause, at this moment of suspension in the void, he seems to have lost touch with the world of forms and objects, but he has not yet found the touch with the world of life, with the other side. But the voice tells him, lose your grasp from the ladder that stretch your hands out above your head. But the child fears. If he loses the grasp of the ladder, will he not fall into the yawning gulf below? He cannot see above his head. The air seems empty, total empty. There is not to grasp. Then comes the supreme act of faith. This is really, one can really imagine. Can you please show trapezium, that 1 minute thing? Vimalji? Taralji? Yeah, I am showing. One minute, please. Okay. Are you getting the sound? तरल जी काफी है. Hope all of you could really imagine. In that U-turn, no, that grasp is not there. We have just left the hand. That rod has gone. We have come all the way from there. We have to take turn and to hold. When they have left, we don't know. When God is helping, we don't know. If we hold, fine. Otherwise, we will fall down. That is for sure. There is nothing. Everything is empty. 100% one should be alert to catch hold. Everything is time bound. 1 second also the difference happens, means gone. So that is the crucial time. Then only the faith in the Supreme will come. This is the time. He has to fall, he has to come and leave that rod. Then he has to catch hold of the other one. In between, nothing else is there. Only fear is there. There is no faith because he has not seen. If he leave his hand, gone. So he has to catch hold. He has to raise his hand. That is what masters have told. If you raise your hand one step above, I'll put my hand 9 steps down below to hold you. That is the faith one should have. Then from out of nothingness of being, the eternal being arises. This is where the eternity will come. Eternal being arises. When the disciple approaches his teacher, he must ever come with the sacrificial fuel in his hand. What is the sacrificial fuel?
It represents everything that belongs to the life of form, everything that belongs to the personal lower self. He must burn his lower nature and his own, that too from his own hands, and must light the fire. He must sacrifice himself. None else will do it for him. He himself has to put that fire. The law of sacrifice is that life of the spirit consists in giving and not in taking. Form is limited, life is unlimited. Therefore, the form lives by taking and life gives by giving. In that taking, it is horizontal growth. In giving, the growth is vertical. So that trapezium thing we have seen. Then how can one make it real? The sacrifice. Sacrifice starts with the physical plane. We're all doing, acting, everything act. So how to start this life of sacrifices? First and foremost is dana. Whatever we have. In the beginning, whatever excess is there, we'll start giving. Then what we have, otherwise what the other person is interested or in need, we will understand the pain of that person and we will give. At the end, without any effort, whatever we have, even in case if we want that, we also will just give without any effort. And while giving, we will not even think what is the cost of the thing which we are donating or giving. In the beginning, it is in the form of charity. Then everything, whatever we have, we will give ourselves completely without keeping anything except the faith in God only will be there. Effortlessly we will be giving. The law of sacrifice being thus the fundamental law of life, evolution in the universe, we find every step in the ladder is accomplished by sacrifice. The life pouring itself out of taking birth in a higher form, while the form that contains it perishes. In the beginning, that mineral form will perish, it goes. Then the plant, we will take birth in the plant kingdom. Then that also goes. Then again animal, then human being, then one life after the other life. Then the aim is to become the superhuman being. So everything gradually goes. The lower thing keeps on going, only the higher thing keeps on coming. For him, high and low, great or small are the same. He fills any place that needs filling. Then each thought, each word, each action in daily life will be done as a sacrifice because there is no sense of separateness in it. All these things are on sacrifice. Then let's see what other people have spoken about or said about the sacrifice. The greatest sacrifice is when you sacrifice your own happiness for the sake of someone else. The sacrifice to be real must cost, must hurt, must empty yourself. That is personality. This is what Mother Teresa says. It must cost, it must hurt, it must empty yourself. Self is, this is lower self. You can have anything in life if you will sacrifice anything else for it. This is what J.M. Bry says. Motherhood is a gift for women and the other name is sacrifice. What example one can quote? Motherhood itself is a greatest sacrifice. This is the main thing, creation. Ishvara has created this universe. Mother has created each one of us. Then in the beginning, the idea of sacrifice gives us pain because we think that we are losing. We have identified ourselves with that personality. But actually, sacrifice is not pain, but joy. Sacrifice that was sorrowful was an utter delusion. It is just delusion. Bhranti, we say. More blissful than any bliss that the world can offer is the bliss of free spirit, which by pouring itself out finds an union with the self, no difference between the form and form. Then there is a room for fear. There is no question of fear. There is no question of challenge also. That is true peace, and that alone is wisdom. In the beginning it was knowledge. Now it is concluding with the wisdom. To know the self is alone the spiritual life, and that life is joy and peace. The law of sacrifice is summed up in Mahavakya, that is, this great world, I am thou, thou art I, that is Aham
Brahmasmi. I am Brahman, or I am divine. This is what in the beginning she has told. This is it. It raises above till it gets united with the thing. Hence, compassion takes place of what in the man of the world is repulsion. Love takes place of hatred. The tenderness replaces in indifference, and the sacrificer is marked in his attitude to those around him by this touch of divine compassion, which cannot be see the repulsiveness of the outer form, but can only realize the beauty of the self enshrined therein. We all know that every cloud has a silver lining. In the same way, every sacrifice has got a reward of its own type. Thank you very much. थैंक यू सो मच संध्या जी, आपने बिल्कुल सही समय पर खत्म किया। और ललिता जी, अब आप अपना पार्ट सेकंड हमारे सामने रखिए। थैंक यू सो मच। ಉನ್ನತ ಜೀವನದ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನಿಬೆಸೆಂಟಮ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತ್ಯಾಗದ ನಿಯಮ ಮಾನವನನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತೆ, ಅವನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಐಕ್ಯವಾಗುವಿಕೆಯನ್ನ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಈಶ್ವರನ ತ್ಯಾಗದಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಚಿನ್ನದ ಸರವೇ ತ್ಯಾಗದ ನಿಯಮ. ಈ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಅದರ ಕ್ರಿಯೆ ಕರ್ಮಬದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅದರ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಂತ ಮತ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕರ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೇವೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ನಾವು ಈಗ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗ ಸಾಧಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯದ ಬಂಧನ ಸಡಿಲಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸಾಧಕನ ಆಲೋಚನೆಯು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸಾಧಕ ಯು ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ, ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಂತ. ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ವೈರಾಗ್ಯ ಆವರಿಸಿದೆ, ಅಂಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಧಕನನ್ನ ಶಾಂತಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂಥರ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಶೂನ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರೇರಕವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಉತ್ತೇಜನ ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದ ಸಂಪರ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರತ್ತೆ? ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ರು. ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪರ್ವತ ಶಿಖರ, ಒಂದು ಶಿಖರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇದೆ, ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಧ ದಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕಾಲ ಕೆಳಗಿನ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದ್ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಶಿಖರನೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಪರ್ವತ ಶಿಖರನೂ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಒಂದ್ ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದು ನೇತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂಟಿತನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಇದು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರು. ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಟೆಂಟಿನ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 4 ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ 4 ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಜನ ಈ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಿಂದ ಆ ಉಯ್ಯಾಲೆಗೆ, ಆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಿಂದ ಈ ಉಯ್ಯಾಲೆಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ತಿರುಗಿದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಧಕ ಇವಾಗ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಧಕ ಒಂಟಿ.
ಅವನು ಆ ತಾರ್ಕಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದ ಜಿಗಿದಾಗಿದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದವನು ಮಾತ್ರ ಅಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಅಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ನೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ತರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದಾನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇತರರ ಏಳಿಗೆ ಮೊದಲು, ಅನಂತರ ನಂತು. ಹೀಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೋಧಿಸತ್ವರು ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಪಡೆದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವು ಅರ್ಪಣಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಂದಂತೆಯೇ ಸಾಧಕ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದನ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾನೆ. ತ್ಯಾಗದ ನಿಯಮ ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮ. ಈ ಏಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಜೀವ ಉನ್ನತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಧಕನಿಗೆ ಮೇಲು ಕೀಳು ದೊಡ್ಡದು ಸಣ್ಣದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇವಾಗ ಅವನ್ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಿಟ್ ಆಗಬಲ್ಲ, ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗಬಲ್ಲ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವಿತದ ಅವನ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗಮಯನೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರರು ತ್ಯಾಗದ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಇತರರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು. ತ್ಯಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಡಿತೀಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತೃತ್ವವೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗದ ಆಲೋಚನೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನ ತರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಹಂನೊಂದಿಗೆ ದೇಹಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಈಗ. ನಿಜವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋದು ನೋವು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆನಂದವನ್ನೇ ತರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದೊಂದು ವರ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆದರಿಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಈ ತ್ಯಾಗದ ನಿಯಮವನ್ನ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಉದ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ತ್ಯಾಗ ಆನಂದವನ್ನ ತರುತ್ತೆ. ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಪರಮ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಭಯ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ. ತೆಗಳಿಕೆ ನಿಂದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಗ ಐಕ್ಯತಾ ಮನೋಭಾವ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನ. ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಅರಿಯುವುದು. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನ. ಸಾಧಕ ಈಗ ಸಾಧಕನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಡೀತಿರೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನ. ಇದು ಪರಮ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಜೀವನ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಜೀವನ. ಕರುಣೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅವನ ಹೃದಯದಿಂದ. ದ್ವೇಷದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೂ ಉದಾಸೀನದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಧವತೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಂದರ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ತಾನು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಕಾದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ತ್ಯಾಗದ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much. रुद्राक्षी जी, हाँ जी सर। आइए और अपना हिंदी का बचा हुआ भाग दूसरा हमारे सबके सामने रखिए. धन्यवाद. वापिस नमस्कार सभी को। अपन पहले हमने पढ़ा था कि बलिदान जो है मतलब हमारे प्राचीन इतिहास में बलिदान का क्या महत्व था, क्या था, और अब जो है हम उससे संबंधित उपनिषदों में क्या बातें कही गई है इसका मतलब चर्चा करें। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों को निभाने का अधिकार है, लेकिन आप अपने फल के अधिकार नहीं है हमारे कार्य। कभी भी अपने को कर्मों के फल का कारण न समझे और न ही निष्क्रियता में आसक्त रहे। हे कुंती के पुत्र, तुम कर्म करते रहो। कर्म के फल के त्याग से सभी कर्मों को यज्ञ के फल का त्याग करते हैं। तब हम कर्म के बंधनों को ढीला करना शुरू कर देते हैं जो हमें दुनिया से बांधते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है कि आसक्ति के साथ मृत सामंजस्य पूर्ण ज्ञान ने स्थापित
उनके विचार, उनके कर्म बलिदान, सभी कर्म पिघल जाते हैं। अब विकसित हो रहे मनुष्य को जो पाठ सीखना है वह है निवृत्ति मार्ग यानी U-turn। महत्वपूर्ण बिंदु अब विकसित जीव के इतिहास में आता है। वह कर्म के फल को त्यागने की कोशिश कर रहा है और अब अपरिहार्य परिणाम बताया है। फल से लगाव दूर हो जाता है, वैराग्य उसे पकड़ लेता है, वैराग्य उस पर हावी हो जाता है और वह खुद को लटका हुआ पाता है, जैसे कि वह शून्य में था। कार्रवाई के सभी मकसद गायब हो गए हैं। उन्होंने प्रकृति मार्ग की उत्तेजना भी खो दी है। उन्हें अभी तक निवृत्ति मार्ग की उत्तेजना नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि वह कर्तव्य के कानून से थक गया है। उसने अभी तक बलिदान के कानून का तल नहीं देखा। विराम के इस क्षण में, शून्य में निलंबन के इस क्षण में ऐसा लगता है कि उसने स्पर्श खो दिया रूपों और वस्तुओं की दुनिया के साथ, लेकिन अभी तक जीवन की दुनिया के साथ उन्होंने अभी तक जीवन की दुनिया के साथ दूसरे पक्ष के साथ संपर्क नहीं किया है। लेकिन एक आवाज उसे बताती है, सीधी सी अपनी पकड़ ढीली कर और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर फैलाए। लेकिन बच्चा डरता है। अगर वह सीधी की पकड़ खो देता है तो क्या वह नीचे जमाई की खाड़ी के लिए वह अपने सिर के ऊपर नहीं देख सकता? हवा खाली लगती है, समझ में कुछ नहीं आता। फिर आस्था का सर्वोच्च कार्य करता है। तब शून्यता से शाश्वत सत्ता का उदय होता है। जब शिष्य अपने गुरु के पास जाता है तो उसे हमेशा अपने हाथ में बलि का ईंधन लेकर जाना चाहिए। बलि का ईंधन क्या है? यह हर उस चीज का प्रतिनिधित्व करता है जो रूप के जीवन से संबंधित है। वह सब कुछ जो व्यक्तिगत निचले स्व से संबंधित है, उससे अपनी निरंतर प्रकृति को जलाना चाहिए। उससे अपना बलिदान देना चाहिए। उसके लिए कोई और कुछ नहीं कर सकता। बलिदान का नियम यह है कि आत्मा का जीवन देने में है, देने में नहीं। इसलिए रूप लेने से रहता है और जीवन देने में। इसलिए रूप ले रहता है और जीवन देने से बढ़ता है। कोई इसे वास्तविक कैसे बना सकता है? दान, चैरिटी द्वारा। बलिदान भौतिक विमान से शुरू होता है और लागत की गणना नहीं करता है, लेकिन पूरी तरह से देने को तैयार रहता है। सभी जीवनों से परे, जीवन की सभी स्वयं से परे आत्मा की यह अद्भुत पहचान केवल जीवन की छोटी छोटी बातों में, त्याग के दैनिक कार्यों से, केवल हर विचार, शब्द और क्रिया में एकता को जीने और प्रेम करने के लिए सीखकर, स्वयं को अंतिम और दूसरों को प्रथम स्थान पर रखकर, हमेशा दूसरों की आवश्यकता को देखकर और उसकी आपूर्ति करने का प्रयास करके अपनी निम्न प्रकृति के दावे के प्रति उदासीन रहना, सीख कर और सुनने से इनकार न करना। उन्होंने इसे अपने पीछे पड़े सैकड़ों जन्मों में बार बार, और अंत में वह सहजता से सबका त्याग कर देता है। विश्व धर्म आपको भारत से ईश्वर के अस्तित्व और मनुष्य की एकता के सिद्धांत को लेना चाहिए। पारस में शुद्धता से, मिस्र ज्ञान से, ग्रीस सौंदर्य से, रोम कानून से, इब्रानी धार्मिकता से, ईसाई धर्म से आत्म बलिदान। पूर्व में उनके बलिदान को उनके बोधिसत्व होने का प्रतीक माना जाता है, अर्थात जिन्होंने मनुष्य के उद्धार के लिए, दुनिया की सेवा के लिए खुद को हमेशा के लिए समर्पित कर दिया है। आत्म बलिदान के एक कार्य से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए लोग प्रकट हुए। बलिदान से ब्रह्मांड की रक्षा की जाती है और बलिदान से मनुष्य पूर्णता को प्राप्त होता है। बलिदान का नियम इस प्रकार ब्रह्मांड में जीवन विकास का मौलिक नियम है, और हम पाते हैं कि स्थिति में हर कदम बलिदान द्वारा पूरा किया जाता है। जीवन एक उच्च रूप में जन्म लेने के लिए उड़ेला जाता है, जबकि जिस रूप में यह निहित होता है वह सब नष्ट हो जाता है। सारा खनिज, वनस्पति, साम्राज्य, पशु, मनुष्य, यह रूपांतरण उस उद्देश्य से किया जाता है जो उस विमान को निर्धारित करता है जिस पर ऊर्जा मुक्त होती है। यदि मनुष्य का उद्देश्य
भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति है तो मुक्त ऊर्जा भौतिक स्तर पर ही कार्य करती है। यद्यपि वह सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा मुक्त करता है यदि वह मानसिक स्तर पर कार्य करती है, लेकिन अगर वह खुद को लोगों का चैनल बनने के लिए बलिदान करता है तो वह आध्यात्मिक स्तर पर ऊर्जा को मुक्त करता है और यह हर जगह आध्यात्मिक शक्ति और उत्सुकता के साथ कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म और अकर्म एक ही है, क्योंकि वह कुछ न करते हुए भी सब कुछ करता है, वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है। सार उसके लिए उदय और निम्न, महान और छोटे समान है। वह किसी भी स्थान को भर देता है जिसे भरने की आवश्यकता है। फिर प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य एक बलिदान के रूप में किया जाएगा। जो कुछ भी आता है वह उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाएगा। खुशियां, परेशानियां, चिंता, सफलताएं, असफलताएं, सभी का उनकी सेवा के मार्ग को चिन्हित करने के रूप में स्वागत है। वह हर एक को खुशी खुशी पाएगा और वह उसे बलिदान के रूप में चढ़ाएगा। वह हर एक को खुशी खुशी खो देगा, क्योंकि उसके खो जाने से पता चलता है कि उसके मन को अब उसकी जरूरत नहीं है। बलिदान का नियम है जो ब्रह्मांड के साथ साथ पुरुषों के दिलों पर भी शासन करता है। बलिदान का मौलिक कानून है, वह महान कानून है जो प्रकट ब्रह्मांड में सभी की जड़ है और लगातार खुद को मैं व्यक्त कर रहा है। यह मनुष्य को स्वयं को अलग भौतिक अधिकार का अनुभव कराता है। ये नियम शिष्यों के लिए है, संसार के लिए नहीं। वह खुद को अपने चारों ओर से श्रेष्ठ महसूस कराता है और यह एक इच्छा के रूप में दिखाता है कि दूसरों ने बलिदान के बारे में क्या बताया है। पहला, सबसे बड़ा बलिदान वह है जब आप किसी और की खातिर अपनी खुशी का त्याग करते हैं। वास्तविक होने के लिए एक बलिदान की कीमत होनी चाहिए, उससे चोट पहुंचनी चाहिए, खुद को खाली करना चाहिए। ऐसा मदर टेरेसा ने कहा है। आपके पास जीवन में कुछ भी हो सकता है, अगर आज इसके लिए बाकी सब कुछ त्याग देंगे तो। वास्तव में बलिदान दर्द नहीं है, बलिदान आनंद है। बलिदान है कि दुख एक पूर्ण भ्रम था, दुनिया के किसी भी आनंद से अधिक आनंदमय मुक्त आत्मा का आनंद है, जो स्वयं को बाहर निकालकर स्वयं के साथ मिलन पाता है और यह एक ही रूप की सीमा का पालन करने के बजाय कई चैनलों के साथ बहते हुए कई रूपों में रह रहा है। रूप और रूप में कोई अंतर नहीं जानते, एक स्व के अलावा और कुछ नहीं है, और न तो डरने के लिए और न ही चुनौती देने के लिए। वही सच्ची शांति है और वही सच्ची बुद्धि है। आत्म को जानना ही आध्यात्मिक जीवन है और वह जीवन ही आनंद और शांति है। बलिदान का नियम इस महावाक्य में है, इस महान शब्द में संक्षेप है, अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ब्रह्म है, मैं ब्राह्मण का रूप। इसलिए करुणा दुनिया के आदमी में प्रतिकर्षण की जगह लेती है, घृणा के स्थान पर प्रेम और कोमलता, उदासीनता की जगह लेती है और बलिदानी को अपने आसपास के लोगों के प्रति दैवीय करुणा के स्पर्श रूप से चिन्हित किया जाता है, जो बाहरी रूप को, प्रतिकारता को नहीं देख सकता है, लेकिन स्वयं की सुंदरता को महसूस कर सकता है। धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने मुझे समय देकर सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी समय पर रुद्राक्षी पूरा किया और तीनों वक्ताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस चुनौती को जो हमने बार बार रखी है कि अलग अलग भाषाओं में। ललिता जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया, ऑन कीजिए प्लीज। ओह सॉरी। तो ये तीनों वक्ता अभी यहाँ पर मंच पर हैं। ललिता जी अपना वीडियो ऑन करेंगे अभी जी। तो अभी आप मंच पर हैं, कोई भी अगर प्रश्न कोई पूछना चाहे तीनों में से किसी से भी तो वे पूछ सकते हैं। संध्या जी, आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए यहाँ है। मैं तब तक चैट बॉक्स में देखता हूँ, किसी ने कोई प्रश्न पूछा है या कुछ कहना हो किसी को तो वो भी कह सकते। मुझे कोई प्रश्न दिख नहीं रहा है। नो क्वेश्चंस। हाँ बोलिए। नो क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस। नो डाउट।
वो तो आप पूछिए सबसे, कोई कुछ कहना चाहता हो। नवीन जी ने काफी कुछ लिखा है यहाँ पर, तो यदि वे कुछ भाव व्यक्त करना चाहते हो मैं पढ़ूं, उससे अच्छा वे ही कह सकते हैं। और नवीन जी हाँ नहीं, आपने जो हाँ नहीं, हाँ तरल जी, जी तरल जी, जी वो शायद आपने अपने निमंत्रण में उल्लेख भी किया था कि कुछ अच्छी पुस्तकों का, और इस विषय में मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एनी बेसेंट की एक पुस्तक है जिसका नाम है सनातन धर्म, सनातन धर्म, और उस पुस्तक में सैक्रिफाइस के ऊपर भी एक चैप्टर है. इट इज वर्थ रीडिंग. एंड my second observation is that in the book Laws of Higher Life, Annie Besant has given 3 chapters. One chapter is the law of higher consciousness, second chapter is law of duty, and the third chapter is law of sacrifice. So this book kind of explains what is the difference between duty and sacrifice. Similarly, in the second chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna has explained to Arjuna that first you should look to your duty, because you are a Kshatriya, and it is the duty of the Kshatriya to fight against injustices. However, later in the same chapter and subsequent chapters, Lord Krishna has expounded the law of sacrifice, which is superior to, for example, since we are brought up by our parents in the childhood, it is our duty to look after them when they grow old, and it is like a unwritten contract. They look after you for first 20 years, and you look after them in their last 20 years. So it is nothing great in it. It is just any good person should do it. Yes. However, when we come in the realm of sacrifice, even when certain things are not your duty, still, if they are benefiting a goodly number of people, or it is benefiting a person in need or person in difficulty, then it is called sacrifice. No one can compel you to do that work. It is not no one will blame you if you don't do, but it will give you a lot of inner satisfaction and inner happiness when you do something, even when society doesn't expect you to do that help. So then we come in the realm of sacrifice. And my last observation is that there is a very beautiful way in which every act of one should become sacrifice is explained in the 9th chapter of Bhagavad Gita, which is called Rajguhya Raj Vidya Yoga. That is the kingly science and kingly secret yoga in the Bhagavad Gita, translated by Annie Besant. And that gives a very simple way of doing acts of sacrifice. It says that whatever work you do, even if you are eating, even if you are talking, even if you are giving something to someone, or even do it as if it is offering to the higher divinity, and therefore, or the deity who you love. And when you love someone, you always try to do a work in such a way that it will please that person. So therefore,
Lord Krishna says that any work which you do it as an offering to me. And the same thing has been kind of mentioned in the small book at the feet of the master, which says that always keep in mind that master is watching you, and so that whatever you do in a manner which is perfect and which will please the master rather than displease. So these are the few things which I wanted to say. Thank you very much. And I thank all the speakers. They have explained this difficult topic very nicely. And thank you, Taralji and Archanaji, for continuing this very nice venture. And it has kindled at least my interest in other languages also. And it has improved my understanding of the languages like Hindi and Marathi, which I know a little bit. So it is, in addition to learning the subject matter, it is improving our grip over the languages which we know. Thank you very much, Taralji. Thank you, Archanaji. Thank you so much for your views. Chandrakantji, Shindeji, please unmute yourself. Thank you. Well, thank you. Navin Kumar Ji has already explained very nicely and given the congratulations to all the three speakers. I know very well these two speakers, especially Lalita Natarajan and Sandhya Rani. They belong to the Karnataka Federation and they are very dedicated, and they have themselves have sacrificed their life to serve the humanity through the Theosophical Society. They are very active, and therefore they are really authentically speaking the importance of sacrifice to all of you. I am really happy and enlightened actually, and to listen these people is always good. And I can understand well the Kannada also, and I always appreciate Lalita Natarajan. She is a very good speaker, and she goes very deeper and deeper and deeper to that extent, which we expect. And really, I congratulate Lalita Natarajan for her contribution and giving her time to, at least her time to spare with us and share this one. And Sandhya Rani is always devoted. And as she said, swinging video, that itself indicates how we can be free from the idea of sacrifice also. Unless we are free from the idea of sacrifice, we cannot hold the other one. So that is the point. Idea of sacrifice is still remains there, and that must be gone. And that stage she explained very nicely. Really, I appreciate the way in which they have expressed. And Rudrakshi Devi is really appreciable because she gave us really one kind of inspiration, her enthusiasm, her expressions, all of these three. And this time I can understand all the three languages. So I appreciate really Triveni. Yes. I also know all these three people very well. But what we have to remember is that idea of sacrifice is there at the end of the life also. We are not ready to sacrifice our life. And this is the conditioning of the human form in the survival of the fittest in the course of evolution. We have this idea of wanting, and the mind is fully conditioned with this idea of wanting. I want to sacrifice. This also remains, and that must also, we must sacrifice. That is what I got this idea just
while listening to these great souls. I call them great souls because they have sacrificed a lot for the service of the humanity through Theosophical Society. Once again, I congratulate all the three speakers, and also I congratulate to Taral to find out these souls rightly and to bring them to the focus of the whole humanity. Thank you very much to all of you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yes. Quickly, words from Harshadan ji, Vimal ji, or anyone else. Yes, Taral ji, Yes, sir. I would like to say a few words about Rudrakshi. I congratulate Mahesh ji that you have given a wonderful training to Rudrakshi, or rather you have allowed her to study Theosophy. मैं आपसे इस तरह से बात करता हूं कि महेश जी ने जिस तरह से आपको पाला पोसा और एक तरह से आपको थियोसॉफी में जो इंटरेस्ट आप दिखा रही है वो तो जन्मजात होता है, शायद कई जन्मों से आया होगा, लेकिन उसका पनपना, उसका उस कुटुंब में आकर आपको उस दिशा में ले जाना, ये महेश जी का काम है। तो उनको बहुत बहुत बधाई। और आप आगे इस तरह से पढ़ाई करते रहे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ थियोसॉफी की भी पढ़ाई आपकी जारी रहे। तो ये मैं आपसे एक वादा है वो देता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं यहाँ आपको उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले कई महीनों से जब भी इसको भी मैसेज डालता था, ये कहती सर मेरी 21 को एग्जाम खत्म हो रही है, उसके बाद मैं तुरंत आप जैसा बोलो मैं खुद उत्साहित आ रहा हूँ। और एक भी मैसेज जो विज्ञापन का या जो फ्लायर जाते हैं उसका एग्जाम के दौरान भी रिस्पांस दिया है बहुत अच्छी तरह से। तो वो तो मेहरबानी है हमारे मास्टर्स की और थियोसॉफी की कि ये यंगस्टर्स हैं, और मैं भी उन्हें बड़ों के बीच में ला देता हूँ ताकि उन्हें ये मालूम पड़े कि उन्हें सिर्फ अपनी उम्र में नहीं बड़ी उम्र के लोगों के साथ भी अपने आप को तैयार करना है। तो ये थोड़ा सा दोष हो कहो या जो भी कहो, ये हक से मैं उन लोगों को कहता हूँ, और हर बार एक कैंसर जरूर होता है। हमारा हक है भाई। सरल जी नमस्कार। हाँ सरल सुषमा जी जी बोलिए, नमस्कार। बोलिए सुषमा जी। हाँ, पहले तो बहुत बहुत आभार, ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ तीनों वक्ताओं के लिए। और मुझे संध्या जी की बात जो मेरे जहन में चल रही थी जब टॉक हो रहा था कि जो ईश्वर ने सेक्रीफाइस किया है, एक संस्कृत में श्लोक है, एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये ईश्वर का पहला सेक्रीफाइस है। तो जो सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट ईश्वर में है वही लेटेंट फॉर्म में हम में भी है, लेकिन वो अभी अनावृत नहीं हुआ। लेकिन जैसे धीरे धीरे जब हम शारीरिक मतलब ये रिएक्शन से, इमोशन से, मेंटल जो है वो फीलिंग से कुछ भी हम दूसरे को देते हैं तो वो अनावृत हो जाता है। और ये भी एक आर्ट है। गांधी जी ने लिखा, अ लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस इज द पिनेकल ऑफ आर्ट एंड फुल ऑफ ट्रू जॉय। ये जैसे आज शाम को तरल जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था, उसी से रिलेटेड मुझे बात याद आ गई कि ये एक बलिदान जो है वो जीवन जीने की कला है। और जिस दिन हमको ये कला आ जाएगी उस दिन हम एकत्व का अनुभव करने लगेंगे। गौतम बुद्ध को निर्वाण मिलने के बाद उन्होंने अवतरण का मार्ग चुना, ईश्वर ने अवतरण का मार्ग चुना, यानी नीचे अवतरण, आरोहण का नहीं, अवतरण का मार्ग चुना। तो हमें भी वो सेक्रीफाइस का फीलिंग है, वो बीज है। लेकिन जब ऐसे व्याख्यान हम सुनते हैं तो वो हम फिर उस पर पॉन्डर ओवर करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर से हमको जो है वो ये विचार हमारा जागृत किया, और हम खाली शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और बौद्धिक रूप से हम जो चीज शेयर करें वो सब सेक्रीफाइस है। अपना टाइम शेयर करें, अपने इमोशन शेयर करें, अपनी फीलिंग शेयर करें, तब जो है हम हमारा सेक्रीफाइस जो है वो फुलफिल होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू सुषमा जी। और रुद्राक्षी, आपने शायद देखा नहीं होगा लेकिन बीच में संध्या जी आपको खूब खूब आशीर्वाद दे रही थी, तो आप कहकर भी बोल सकती है, लेकिन जो हाथ उनका एकदम आशीर्वाद का हुआ वो बहुत अच्छा लगा। विमल जी, ओवर टू यू। Yeah, I just want to ask a question to Sandhya ji. अरे वाह।
like law of reincarnation is also called law of necessity. तो क्या हम law of sacrifice को भी necessity कह सकते हैं कि नहीं? One of the basic law, base में है. Everything has come, even the law of renunciation, root is in law of sacrifice. It is not the law. It is not the law. It is the way of. See. नहीं, sacrifice को law बोलते हैं. Instead of calling it as the law, you can say way of service and sacrifice. I'll say this is a law. Okay, so the basic of everything is sacrifice. That's what I think Vimalji meant. The question was that only, Vimalji? I don't know. I'm trying to understand, because the way I am understanding it is that with so many people doing sacrifice, it's not every second in so many lives we have sacrificed. Yes. So that is why, is it a law of necessity also? Because it is not described as a law of necessity, whereas reincarnation is not law of necessity. Joyful. मैं जहाँ तक समझा this trapezium आपने जो दिखाई ना, first time when I read 3 hours I was in that mood. 3 hours. Yes. First time when I read the laws of higher life book, जब मैं पढ़ रही थी ना, exactly it came. I had one photo in our old house. One boy is there and he is in search of God. So he comes. कहाँ है भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? Then nothing else. Then that mountain, no, it's like curve. He will just jump. Nothing else is there. But Bhagwan ऊपर से आके उसका हाथ पकड़ता है. That photo we had in our old house. Right now I don't have. But this trapezium, no, it just explains very beautifully. Nothing else is there. We have left everything. पकड़ने को कुछ नहीं है. We have not seen the other side. निवृत्ति मार्ग भी नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग में इंटरेस्ट तो खत्म हो चुका है. निवृत्ति मार्ग में we have not seen it. This is in between jagah. There that sacrifice will come. It is not again dead. We will not count. We will just identify ourselves with everything. That is what Annie Besant has written. No, that is yoga. It merges into the higher thing. Law of sacrifice lifts him upwards and enables him to reach union with the divine. This is nothing but yoga. All of us are trying to unite with everything, no? That's it. Thank you. जी संध्या जी आपने बताया, और विमल जी जो शायद मैं समझाऊं तो मैं भी 2 लाइन का एक्सप्रेशन होऊंगा, अगर मैं सही नहीं हूं तो मुझे करेक्ट करें, कि द लॉ ऑफ सेक्रीफाइस, इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो लॉ बोल सकता है, लेकिन हिंदी में लॉ के 2 शब्द हो सकते हैं. एक तो कानून हो सकता है और एक हो सकता है नियम. बराबर. तो नियम और कानून में फर्क क्या है कि कानून बनाए जाते हैं, बराबर है, नियम अपने आप होते हैं. जैसे बोलते हैं ना कि प्रकृति का नियम, बारिश का नियम, नियम अपने आप में होते हैं. तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का शायद एक कि मतलब गरीबी कहूंगा कि उसमें एक ही शब्द है, इसलिए हम उसको कानून के साथ जोड़ते हैं. और जैसे शिंदे जी ने बताया कि वो भी एक नियम है जो प्रकृति का नियम है. जैसे सूरज उगना डूबना, तो सूरज जब उगता है प्रकृति उसमें सन भी अपना सेक्रीफाइस देता है उजाले का, और उसके बदले में कुछ भी नहीं लेता है, बराबर ना. तो वो एक नियम है जो लगातार घटता रहता है, जो मैं स्टॉक से भी समझा है. और लगातार प्रकृति भी अपना सेक्रीफाइस देती है. जहाँ मतलब बीज उगता है, झाड़ में परिवर्तित होता है, पत्तियां झड़ती हैं, बीज होते हैं, वापस बढ़ता है. तो हर जगह एक सेक्रीफाइस है. पत्तियों का सूखापन होने का सेक्रीफाइस, बीज का फल का बीज में रूप में होने का सेक्रीफाइस, बीज का वापस अपना स्वरूप होके वापस उत्पत्ति का सेक्रीफाइस. तो ये शायद ये जो चक्र है वो नियम है, वो लॉ नहीं हो सकता, वो कानून नहीं हो सकता, वो एक नियम है जो होता है. ऐसा मेरी समझ में आया. In Kannada, in case if you have keenly listened to her, she has mentioned the meaning, na? Yes. Tyaga niyama हम लोग ने लिखा है in Kannada. In Hindi, बलिदान नियम, बलिदान लिखा है आपने. Bali is slaughtering. That is what, yeah. बलिदान that is like taking.
life taking. Here, this is arpane. What I have, I don't want. I'll just, tyajisu, tyag. त्याग. Okay, whatever the desire is there. श्रेया प्रिय, इसलिए मैंने ज्यादा वेटेज उसको दिया. वो जो प्रिय होता है ना हम लोगों के लिए, उसको त्याग करना है. Then only the shreyas, good of all. Then only that arpane will come. जी. भगवान को अर्पित करना. बिल्कुल बिल्कुल. I just want to add one small thing. आपने संध्या जी just said that the sacrifice of the mother is the greatest. लेकिन मुझे लगता है we are discounting the sacrifice of fathers of men also. Yes. What is the sacrifice they make is that they stay loyal to the wife. That is the greatest sacrifice. वो उस घर को चलाने का काम जो वाइफ को वैल्यू देते हैं ना, वो सैक्रिफाइस है. वो कर सकते हैं कुछ भी बाहर, लेकिन वो जो नहीं करते हैं ना, वो सैक्रिफाइस. इससे बड़ा भी जो पिता होता है, वो जो सैक्रिफाइस देता है ना, वो पत्नी, पिता, बड़ा भाई या जो भी हो, वो कभी खुद के लिए नहीं सोचता है. वो सोचता है कि घर कैसे चले, घर के लिए कमा रहा हूँ, घर के लिए ये कर रहा हूँ. तो ये भी एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है. मतलब जो लगातार हर पुरुष अपने आप ही देता है, ये नियम की तरह उसके साथ जुड़ा रहता है. तो ये सही बात है कि पुरुष स्त्री दोनों एक्चुअली हैं तो सोल्स, तो वो सभी पुरुष नहीं है, अर्धनारीश्वरा है बस. बिल्कुल. तो बहुत अच्छी बात है. और त्रिवेणी में मुझे अच्छा सबसे ज्यादा दिल में यही असर करता है कि प्रश्न की जगह वो विषय और ऊपर चढ़ता है, ताकि जो लोग भी ज्ञानी लोग होते हैं वो अपना शेयर करते हैं, रुकते हैं इतनी देर. बहुत बड़ी बात है. और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को. मेरे ख्याल से 8:12 हो रहे हैं, हमें समापन की ओर जाना चाहिए अगर आज्ञा हो आप लोगों की. तो मैं अतुल भाई से निवेदन करूंगा कि वे समापन की ओर चलें. કેશવબેન આપણને શિવોમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न कर्णं न जिह्वा न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. शिवोहम 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 शिवोहम. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, न वा सप्त धातुर न वा पंच कोशः, न वाक्पाणि पादौ न चौपस्थ पायुः. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. शिवोहम 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 शिवोहम. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः. न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. शिवोहम 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 शिवोहम. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ. अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम.
शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् बहुत धन्यवाद और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी और आगे वो चर्चा बढ़ाते हैं। धन्यवाद। वैसे एक मुझे छोटा सा पॉइंट सूझ रहा था, बलिदान की जो बात हुई तो देश पर बलिदान करने वाले लोग होते हैं। बलिदान का मतलब बलि नहीं होता, मैं वो रिकॉर्डिंग के वक्त बोला नहीं क्योंकि चर्चा बढ़ जाती। तो बलि जो होती है ना वो काट के और बलि दी जाती है। बलिदान मतलब वो दान हुआ, तो देश के लिए जो बलिदान करता है उसे स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। इसलिए वो शब्द सही है, पर मैंने कहा उसका चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता था। बलि का मतलब होता है मारना। धन्यवाद। अबान जी, आप कहीं चली गई थी बीच में। थैंक यू एवरीबॉडी।